गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गन शॉट वंस अगेन। आज हम दोबारा चाइना के अंदर एक झांक लेंगे जिसमें हम टू सेशंस के बारे में बात करेंगे। द टू सेशंस इज एन ऑनगोइंग पॉलिटिकल इवेंट इन चाइना. It started on Saturday, it's finishing on Sunday, that is today. This gives you a peek into the internal events in China. उनका लीडरशिप क्या सोचता है, उनका सोच विचार क्या है, which direction are they want to head or take China into is what you'll get in this session. Understanding China is a key to how to handle it, and tracking the two sessions is a key to understanding China. Right? What are the two sessions? क्या हैं ये two sessions? It is the meeting of the country's legislature, the National People's Congress, and the top political advisory body, which is the Chinese People's Political Consultative Conference. This whole thing is the government part of the CCP. In last year in October, हमने देखा था कि 20th Party Congress हुआ था. The 20th Party Congress is the political head or the political big event in the Chinese Communist Party, which takes place once in 5 years. Whereas the two sessions is almost a quasi-government, quasi-political system, which gives direction to the government as to how to run it. It happens every year, right? So it's happening this year. But then you'll ask me, what is special? ये तो हर साल एक बार होता है, तो इसमें क्या खास है कि हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं, या आपको सुनना पड़ेगा इसके बारे में. This is important because this marks the beginning of Xi Jinping's third term. 20th Party Congress अक्टूबर में he was nominated, वो चुने गए थे, मत चुने नहीं, अपने आप को घोषित किया कि वो मैं तीसरे टर्म तक प्रेसिडेंट रहूंगा और जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी रहूंगा. उसका जो परिणाम ये है कि मार्च से लेकर अगले 5 साल तक ये हेड रहेंगे. उसके साथ साथ इसका जितना नया टीम है, जो पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स हैं, राइट, या इसके खास लोग हैं जिसको इसने गवर्नमेंट में दाखिल किया है, इन दिस टू सेशंस दे विल बी गिवन पोर्टफोलियोस. इट इज ऑलमोस्ट like the first parliament session, right? It is like a combination between the parliament session and the oath taking ceremony. It's very important. And ये हमें इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमें पता होगा कि कौन है, किस तरह का आदमी है, वो क्या करेगा आगे जाकर. ये इसीलिए अब इम्पोर्टेंट है कि हमें पता चलेगा ये कौन सा पद को संभाल रहा है और कैसे आगे लेके जाएगा वो अपना पोर्टफोलियो को, right? Because we're going to deal with them on a day-to-day basis on these issues, right? What is the prime focus of Xi Jinping in this whole session? The prime focus of Xi Jinping is economic stability, technological self-reliance. दो मुद्दे हैं, आर्थिक स्टेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, वो अपना आत्मनिर्भरता, राइट? क्या यह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल कर पाएगा, वो मैं जाके आगे किसी दिन और विश्लेषण करूंगा, क्योंकि मेरे को तो नजर नहीं आ रहा. टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके द रूट which China is adopting is more technical in nature or technological in nature, which we have to understand. There's a shift which is happening, right? And I'll explain it and I'll give you a flavor of this as we go along, because how you're going to deal with China is going to be dependent
on two factors. Let me preempt it, on its military and its technology. Okay, ये जो 2 sessions में the Prime Minister, right, Li Keqiang is going out. He's just got about 5 days left. Immediately after this 2 sessions, someone will take over, and that someone is Li Keqiang. Who's Li Keqiang? Li Keqiang was the boss of Shanghai, and वो जब शंघाई का कठोर लॉकडाउन हुआ था अगस्त सितंबर में, he was the head. He managed the whole thing, and there was a lot of criticism about him. There was news that he might be removed और उसका डिमोशन हो जाएगा, क्योंकि सब ने सोचा कि शंघाई का जो लॉकडाउन है इसने सही तरीके से हैंडल नहीं किया था। पर आश्चर्य की बात है कि ये जी जिनपिंग के चाहता है और उसका चमचा है, complete acolyte of Xi Jinping. So he's been nominated as a prime minister, right? And he's reputed to be pragmatic and pro-business. So it will be interesting, but he's never been part of the government. So Xi Jinping has brought a rank outsider and brought him into the central of the government, or the centerpiece of the government. और जिस आदमी ने एक पद भी सेंट्रल गवर्नमेंट में होल्ड नहीं किया, उसको लाके प्राइम मिनिस्टर बना दिया। पर ये जी जिनपिंग का खास आदमी है। ये तीसरा बात जो हमें काफी इंपॉर्टेंट है, ये है किन गैंग। ये किन गैंग जो है ये वांग यी को रिप्लेस करता है एज फॉरेन मिनिस्टर। मैं इन तीनों के ऊपर ही मैं फोकस कर रहा हूं, जी जिनपिंग, ली कैंग और गिन गैंग, क्योंकि यही लोग जो हैं वो आमतौर पर पिछले 3 साल में जी जिनपिंग या उनका प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के में आते हैं और बात करते रहते हैं, राइट। ये किन गैंग जो है वो अभी G20 में वो आया था, फॉरेन मिनिस्टर्स मीट और फाइनेंस मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में, राइट। इसका और हमारा विदेश मंत्री का वार्तालाप हुआ, एंड ऑफ लाइन वार्तालाप हुआ। देयर वाज अ टॉक बिटवीन मिस्टर जयशंकर एंड केन गैंग, एंड they would talk about the boundary and all that, and resumption of trade, flights, all that. As per the briefing which has come out so far, our external affairs minister has said he's focused on the boundary, and he's made it very clear that unless the LAC related issues are cleared, nothing much can go ahead. He has insisted, and is a pretty hardliner, he has insisted that the boundary can be kept aside, we should focus on trade, which is the traditional stance of China. और ये चाहते हैं कि एलएसी के ऊपर हम उतना ध्यान ना दें दोनों देश, और ट्रेड बढ़ाएं और एक दूसरे के हवाई जहाज का फ्लाइट्स बढ़ाएं। क्या ये मुमकिन होगा? नहीं होगा। ये नया आदमी है, देखते हैं ये किस तरीके से ये आगे चलाएगा। पर बात यह है कि ये एम्बेसडर रह चुका है यूएसए में, और चाइना के लिए जो यूएसए का एम्बेसडर है उसका जो इम्पोर्टेंस है इज प्रीटी हाई। एज एन एम्बेसडर टू चाइना, he was considered quite good till he made a bloop at the end of his tenure, right? He wrote a third-rate article in one of their leading media papers, and he got blasted for it, right? And in fact, I would, more than blasting, it revealed that he is a true hardliner. ये जैसे इसका टेन्योर खत्म हो रहा था यूएसए में, ये इसने बोला कि देखिए यूएसए और चाइना का मेल मिलाप और दोस्ती बढ़ना चाहिए, और अभी का जो वातावरण है दोस्ती में बदलना चाहिए वगैरह वगैरह। पर उसने एक आर्टिकल जो लिखा था
मेरे ख्याल में न्यूयॉर्कर या न्यूयॉर्क पोस्ट में उससे जाहिर हो गया ये एक कट्टर कम्युनिस्ट है ये, राइट। हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बात यह है कि जी जिनपिंग एक माना हुआ एंटी इंडियन है मेरी तरफ से, और ये मैं लिखित में सबको बता चुका हूं कि जब भी जी जिनपिंग इधर आए या हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिले या उनका प्राइम मिनिस्टर ने हमारा देश का टूर किया, फौरन उसके बाद कुछ ना कुछ एलएसी के ऊपर किटपिट हुआ है। If you see the history of visits of Xi Jinping to India or his meetings with Prime Minister Modi, right, you'll see within a month, either side, there's been a major incursion or a major problem. And I've written about this in my articles. So you're going to deal with three hardliners, hardline communist people of the same category. The President, Xi Jinping, the Prime Minister, Li Qiang, and the Foreign Minister, Ken Gang. We have to be very careful. तीनों कट्टर कम्युनिस्ट हैं, तीनों शी जिनपिंग के, मतलब शी जिनपिंग और उसके दो कास्ट चेले हैं, राइट। पहले क्या था कि शी जिनपिंग एंड ली केचियांग वेर फ्रॉम स्लाइटली डिफरेंट क्लिक्स विद इन चाइना, थोड़ा अलग अलग ग्रुप के थे ली केचियांग और शी जिनपिंग। तो ओवरऑल चाइना का जो आउटवर्ड पॉलिसी है थोड़ा बैलेंस था। अभी हो सकता है ये ज्यादा हार्ड लाइन हो जाए, हालांकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी टू हार्ड लाइन फॉर द सिंपल रीजन दे नीड इंडिया। मैंने एक पहले एपिसोड में भी बताया और कल जो हमने कासा के साथ कासा डायलॉग्स में बात किया था कर्बिंग चाइनीज एडवेंचरिज्म, उसमें भी हमने बताया कि China has a front door problem and a rear door problem. Unless they make good with India, their rear door is vulnerable, and they would like to, bolt up their rear door at this point of time when they have to concentrate on their front door. Okay, what are the issues which are going to dominate this, you know, two sessions? Right, the 7 points which have been laid out. Right, these are largely economic points, but खास बात यह है कि ये जो 7 अर्थव्यवस्था के पॉइंट हैं वो जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं चाइना के लिए, बट द मेन थिंग फॉर चाइना इज हाउ कैन इट चेंज इट्स इक्वेशन विद यूएसए एंड इंडिया, एंड ऑफ कोर्स इट्स रीजनल कंट्रीज लाइक जापान, कोरिया, Taiwan, Philippines, and Vietnam. In my opinion, these 5 countries, or India and USA, India, USA, Korea, Philippines, Japan, Vietnam, and Taiwan. China's relations with these will dictate lot about of its outlook. These are the key factors which we have to look politically and externally. Internally are the 7 factors which I will go over one by one. First, their economic growth targets. China always lays a lot of importance on its GDP. It is a matter of prestige that every government must achieve its GDP. अगर जीडीपी उनका जो उन्होंने ले डाउन किया वो अचीव नहीं किया तो ये माना जाता है कि वो गवर्नमेंट का फेलियर है। और पिछले साल इनका टारगेट था 5.5%, पर जीडीपी सिर्फ 2% ग्रो हुआ है, राइट। वर्चुअली इट्स अ फेलियर, बट बिकॉज ऑफ जी जिनपिंग्स overriding political power, he is taken over as the third for the third term. ये ग्राफ देखिए, ये जो लाल लाइन है वो लाइन है 2012 जब जी जिनपिंग took over, and this is the GDP graph of China
on the right side, the graph. From the time Xi Jinping has taken over, the GDP has only steadily fallen, but for the small spike during COVID. अगर ये ग्राफ अगर आप देखेंगे तो जी जिनपिंग जब से टेक ओवर किया, नीचे ही घटता गया जीडीपी इनका, और आगे भी जाके यही प्रॉब्लम होगा। तो ये इनका अभी ये इस 2 सेशंस में हो सकता है ये जीडीपी का टारगेट सेट करेंगे, और वो इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाएगा क्योंकि कैन दे अचीव इट, क्या वो टारगेट बढ़ा चढ़ा के सेट करेंगे टू मेक इट पॉलिटिकली गुड, एंड देन मेक फेक फिगर्स टू अचीव इट। तो ये सब देखना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ व्हाई दिस इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट इज इंपॉर्टेंट, व्हिच विल बी सेट ड्यूरिंग द 2 सेशंस। सेकंड, जी जिनपिंग ने बताया है कि लार्ज स्केल रिस्ट्रक्चरिंग होगा, और इसने ये भी बताया कि अगर इनफैक्ट अगर नहीं, लार्ज स्केल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमी, ऑफ रिफॉर्म्स, एवरीथिंग इज क्रूशियल, राइट, एंड अनिवार्य है ताकि देश आगे बढ़े। पर क्या ये कर पाएगा, और क्या होंगे ये लार्ज स्केल रिस्ट्रक्चरिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये देखने वाली बात है कि ये 2 सेशंस के बाद, राइट, ये क्या रिफॉर्म्स लेके आएंगे और क्या नीति लेके आएंगे टू डू दिस रिस्ट्रक्चरिंग, एंड मोर इम्पोर्टेंटली वी हैव टू सी व्हाट एवर पॉलिसीज दे ब्रिंग आउट, whether what impact it will have internally and on us externally. The third fact is demographic challenges. It's well known their population is declining, right? They're getting aged, no births, workforce is reducing, right? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इनका आबादी के ऊपर काफी फोकस होगा। का आबादी जो है इनको बहुत प्रॉब्लम करेगा, और उसका अर्थव्यवस्था के ऊपर काफी असर पड़ेगा, राइट? तो क्या पॉलिसी इख्तियार किया जाएगा टू एंश्योर ये प्रॉब्लम हल हो जाए, वो देखने वाली बात है। मेरी तरफ से ये पॉपुलेशन का प्रॉब्लम हल नहीं होगा, राइट? खास करके ये देखिए, इनका जो सेंट्रल बैंक का चीफ ने पहले ही बोल दिया कि ये जितने एज्ड पीपल हैं, वृद्धावस्था में जा रहे हैं, उनके लिए पेंशन काफी नहीं है, और चाइना के पास आज के दिन उतना पैसा नहीं है कि वो उनके जितना एजिंग सोसाइटी को पेंशन दें। एंड ऑलरेडी एज वी नो देयर हैव बीन प्रोटेस्ट अगेंस्ट cutting down of pensions. So you're going to have a situation where the country is aging, they don't have pension funds, they're cutting pensions, and they protest. लोग विरोध कर रहे हैं, पेंशन है ही नहीं, पैसा है नहीं, पेंशन का कटौती हो रहा है, और लोग ये वृद्धावस्था में जो जा रहे हैं उनका तादाद बढ़ते जा रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए जो डेमोग्राफी का जो पॉलिसीज हैं, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट विल बी हैंडल्ड। एम्प्लॉयमेंट, दाहिने का ग्राफ देखिए, आप देखोगे नॉर्मल अगर आप लाइन डालोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ता गया है, बढ़ता गया है, बढ़ता गया है। जो इसका डाउन है, जो बीचों बीच वी है, वो है 2010 से पहले। 2010 के बाद इनका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया है, और आज के दिन इनका अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम। देयर इज अ क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन चाइना, especially for those people who are coming out of colleges, young people who are inexperienced, old people who are experienced are also being thrown out, and migrant workers. And the migrant workers make a large part of their workforce. And this is again related to the fact that there's decoupling happening, exports are reducing, factories are closing, and jobs are scarce. How this will be reversed is to be seen. हालांकि अगले पिछले 2-3 दिन से रिपोर्ट ये आ रहे हैं इनके साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में कि फैक्ट्री खुल गए,
फ्लाइट्स बढ़ रहे हैं, वीसा के एप्लीकेशन बढ़ रहे हैं और ट्रेड बढ़ेगा. लेट अस सी वेदर ट्रेड विल रियली गो अप और नॉट, राइट? The next point, which is of importance, which will be discussed in this meet, will be risk control. रिस्क कंट्रोल क्या है? रिस्क कंट्रोल का मतलब उनका प्रॉपर्टी सेक्टर का जो प्रॉब्लम्स है. हमने पहले बता चुके हैं एक एपिसोड में कि इनका जो जितना प्रॉपर्टी सेक्टर है वो कर्ज में डूबा हुआ है, राइट? देयर इज अ बिग प्रॉब्लम. ओवर लिवरेज्ड, फ्लैट्स आर नॉट सेलिंग, देयर आर मॉर्गेज issues, people are not able to pay back their mortgages, the local governments are in financial issues, problems, right? So how this whole thing will be resolved is to be seen, and what will be the policies to resolve this will come out during the two sessions. The next factor which is going to be discussed in these two sessions is technological self-reliance. आश्चर्य की बात है कि चाइना जो है वो साइबर सिक्योरिटी में या साइबर ऑपरेशंस में सबसे आगे है. एआई में माना जाता है उनका, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड इन एआई. दे सेंड लॉट ऑफ थिंग्स टू स्पेस, देयर स्पेस प्रोग्राम इज exploding. They're up on nuclear technology. They talk of technology, but they lack core technologies. उनके पास 3 टेक्नोलॉजी का कमी है. ये मैं हर बार बताता रहता हूँ. एक टेक्नोलॉजी है सेमीकंडक्टर्स, दूसरा टेक्नोलॉजी है इनके पास बीज का टेक्नोलॉजी नहीं है, और तीसरा टेक्नोलॉजी इनके पास खास करके एविएशन इंजन्स का कमी है. इसके अलावा और भी आइटम्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं जो इनको कमी लगता है. सो अगेन, हाउ विल दे मेक दिस अप इज अ इंटरेस्टिंग थिंग. ये पेपर्स में तो बताया जा रहा है देयर बी होल ऑफ नेशन अप्रोच. Whether that whole of nation approach will work or not is to be seen, but it will be interesting to know कि ये whole of nation approach, how will they handle it? Because personally I think we could learn from many of the policies with Chinese set out. After all, हमें भूलना नहीं चाहिए कि for 20 years China has been very successful in progressing on all fronts. So there has to be something very good which China has done, that they've achieved these uh, heights. Can we use them? Right? We can criticize what China is doing, but we should also learn from what China has done. That's the thing. Okay. Next is, of course, restoring confidence. Right? There's a requirement for Xi Jinping and his new cabinet, or whatever you call them, elected or nominated people, to restore confidence in the business, to put regulations in place so that things can start off. Why? क्यों ये बात हो रहा है कि भाई इनको कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना है प्राइवेट सेक्टर में? क्योंकि पिछले 2 साल 3 साल में जी जिनपिंग ने पूरा देश को स्टेट ओन्ड सेक्टर्स की तरफ या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को ही इज गिवन प्रायोरिटी, और the whole economy has become a state controlled economy, something like a command economy or the typical communist economy. He has actually rigged the private sector, whether it's the big tech sector or the financial tech sector or the ed tech sector. The private sector in China is virtually destroyed, and they don't have confidence. And many people in the private sector are going abroad. और वो बाहर जाके सेटअप कर रहे हैं अपने बिजनेस को, या भाग रहे हैं चाइना से. इनको कैसे रोकना है ये देखने वाली बात है. उसी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट या पूंजी और निवेश कैसे अंदर आ सकता है, उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं है किसी को, बिकॉज ऑफ डीकपलिंग एंड ऑल दैट, राइट? Because of the Chinese policies. So how will Xi Jinping infuse confidence amongst people
to come back to China and deal with China and reverse decoupling is to be seen. Will he put policies, any of this, policies to reverse any of this during these two sessions? Well, let us see. It is all expected, right? Okay. तीसरा हिस पॉइंट है जहां कॉन्फिडेंस बढ़ाना की जरूरत है, वो है रेस्टोरिंग कॉन्फिडेंस अमंग्स कंज्यूमर्स। जब तक चाइना के लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, जिस तरीके से हमारा इकोनॉमी है, भारत का इकोनॉमी इज अ कंज्यूमिंग इकोनॉमी, जब तक चाइनीज पीपल डोंट कंज्यूम, their economy will not revive. There is no doubt about it. Can Xi Jinping infuse confidence into the people to start consuming? It's a difficult task because salaries are going down, there's unemployment going up. A person who doesn't have a salary and he's unemployed cannot consume. वो आदमी जिसके पास नौकरी नहीं है और वेतन कम हो रहा है, वो कंजम्पशन की ओर कैसे बढ़ेगा? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके लिए क्या उपाय है और क्या उपाय लेके आएंगे, देखना पड़ेगा। अगले 10-15 दिन में ये क्लैरिफाई होगा और उसके बाद हमारे पास अगले 5 साल हैं इसको, till at least 5 years of term of Xi Jinping, where we can assess what's going on. China's two sessions in 2023, will world tensions win PLA budget boost? Geopolitically, हमें सब पता है कि आज के दिन the geopolitical tensions are at its highest in the past 20 years. There's already a major war, Russia and Ukraine. There's a big divide between the West and Russia. There's also a big divide between Russia and China. And it is likely to increase due to the fact that many in the West feel Russia and China are aligned. Right? And the tensions around the Indo-Pacific are also pretty high. कभी भी लड़ाई छिड़ सकता है, या इंडो पैसिफिक में, या चाइना और यूएसए के बीच में, और कहीं कुछ चुटपुट हो सकता है। कुछ न हर रोज हम सुनते रहते हैं कि कुछ न कुछ छोटा मोटा इंसिडेंट होता है इंडो पैसिफिक एरिया में, और चाइना हमारे साथ भी कुछ न कुछ करती रहती है। तो इस हालत में क्या पीएलए और बजट मांगेगा, ये सवाल है। अगर पीएलए बजट मांगेगा और उसको दिया जाएगा, तो it will be at the expense of other places where China has to invest. But the expectation is that the PLA budget will go up. Traditionally, the PLA budget has been at least 2% ahead of the GDP. If the GDP has been growing at 5%, 6%, the PLA budget has been 7 to 9%. Right? Of the GDP. क्या will this trend continue? क्या पीएलए के बजट बढ़ाया जाएगा इस 2 सेशंस में, या उसका संकेत मिलेगा? ये देखने वाली बात है, क्योंकि अगर पीएलए का बजट बढ़ गया, इट हैज implications on us. Where will it be spent? How will it be spent? And what will it result in? अगर उनका फौज को मजबूत और करते हैं, तो हो सकता है China is preparing for a war, or it will become more adventurous and aggressive and assertive. So let us see what will happen in the days, just a few days more, I'm sure it will come out. But I just thought I'll trigger it today because we have to start thinking. सोचने वाली बात है ये. Right. The last point. ये सब कवर हो गया है, पर फूड सिक्योरिटी के बारे में ये क्या करेंगे? Food security in China is very important because they don't have food security. And China is susceptible to climate change. And by all analysis, China's food security will not be resolved. In fact, it will go worse. चाइना का फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम इतना आसानी से हल होने वाला नहीं है.
राइट। बादल जो मंडरा रहे हैं चाइना के फूड सिक्योरिटी के ऊपर, वो काले हैं, डेंजर है। राइट। इसके बारे में मैं अपने अगले एपिसोड में बात करूंगा। यहां तक के लिए ये 2 सेशंस का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन एज टू व्हाट 2 सेशंस इज ऑल अबाउट एंड व्हाट वी गोइंग टू सी। आगे देखेंगे इसके बारे में क्या संकेत मिलेंगे और चाइना क्या रुख अपनाएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।